Welcome to AffairsCloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name AffairsCloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for topic appointments and resignation for December month. Session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Let's start. The first question is, which Indian cricketer was recently appointed as the Dubai Sports Council's sports ambassador to promote sports in Dubai, UAE? So he is Harbhajan Singh. This announcement was made in the presence of His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Crown Prince of Dubai. Next, who was recently appointed as the new chief of BrahMos Aerospace? So, Dr. Jyotirath Raghvendra Joshi was appointed as the new chief of the BrahMos Aerospace that will be coming into effect from 31st of December 2024. He will be succeeding whom? He will be succeeding Atul Dinkar Rahane. Next is, who has recently received 1-year extension as the chairperson of Public Enterprise Selection Board. So Malika Srinivasan, right, was appointed as the chairperson of Public Enterprise Selection Board beyond the age of 65 from 19th of November 2024, and she will be in this, Malika Srinivasan will be in this position till 18th of November 2025, right, and she is the first private sector leader to head the PESB, that is Public Enterprise Selection Board. Next, in November, Hemant Soren was sworn in as the 14th Chief Minister of Jharkhand, and this is Hemant Soren's 4th term as the Chief Minister of Jharkhand. Next, who has been recently elected as the 11th President of Asian Development Bank? So, Masato Kanda, he is the 11th President of Asian Development Bank. He will be succeeding Masasugu Asakawa. Next, which organization has been appointed or has appointed Nand Kishore as their new Managing Director and Chief Executive Officer? So SBI Funds Management Limited, right, has appointed Nand Kishore as their new Managing Director and Chief Executive Officer. He will be succeeding Samsher Singh. Next, who has been recently appointed as the brand ambassador for Assam Rifles Half Marathon 2024? So Marycom has been appointed as the brand ambassador for Assam Rifles Half Marathon 2024. Marycom, she is a famous wrestler, right, and she is from Shillong. Next, or not wrestler, boxing, correct? Next, which Vijay Chanduk has recently assumed the charge as the Managing Director and Chief Executive Officer of National Securities Depository Limited, succeeding Dash. So Vijay Chanduk has recently assumed the charge as the Managing Director and CEO of NSDL. He will be succeeding Padmaja Chundru. Next, Justice D. Krishna Kumar was recently appointed as the Chief Justice of which state's High Court? So for Manipur High Court, Justice D. Krishna Kumar was appointed as the Chief Justice. Correct? Take a note of this. Next, who has been recently appointed as the new Chief Secretary of Mizoram? So
Khilli Ram Meena was appointed as the new Chief Secretary of Mizoram. He is a 1993 batch IAS officer. Next, who has been elected as the first female president of Namibia for a period of 5 years? So, Nedupili Nitumbu Nadi Nadiavach, correct, appointed as the first female president of Namibia. Next, World Trade Organization General Council unanimously reappointed Ngozi Okonjo-Iweala as the 8th Director General for a consecutive 4-year term. Right, this is her second term and it will be starting from 1st of September 2025. So, right option, option 4. Next, which bank has recently appointed Indian chess prodigy D. Kukesh as their brand ambassador? So, RBL Bank has appointed them as their brand ambassador. Next, Devendra Fadnavis was sworn in as the Dash Chief Minister of Maharashtra. He was the 21st Chief Minister of Maharashtra, and Eknath Shinde and Ajit Pawar has been appointed as the Deputy Chief Minister. Next, who has been recently appointed as the 26th Governor of RBI, replacing Shaktikant Das, and his tenure starts from 11th of December 2024 for a period of 3 years. So, who has been appointed as the 26th Governor of RBI? Sanjay Malhotra. Next, which small finance bank has appointed R. Rameshwaran as their part-time chairman effective from 27th of November to 7th of Feb. So, Jana Small Finance Bank Limited has appointed R. Rameshwaran as their part-time chairman. Next, John Dramani Mahama was recently elected as the president of Dash for the second time by succeeding Mahamudu Bawumia. Correct. So, John Dramani Mahama was elected as the president of Ghana. Next, who has recently taken over as the 29th president of Asian Cricket Council? So, Shami Silva has taken over as the 29th president of Asian Cricket Council. Next, in November, renowned Indian actor Pankaj Tripathi was appointed as the festival ambassador for Arunachal Rang Mahotsav. Next, Vaibhav Chaturvedi was appointed as the ex officio member for which organization? This was for Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI. Next, who was recently elected as the Secretary General of Fencing Confederation of Asia for a period of 4 years? So, Rajiv Mehta. Next, Rimtalba John Inamuel was appointed as the new Prime Minister for which country? For Burkina Faso. Next, Jain Mehta, the Managing Director of which organization, has received a 5-year extension till 29/2030 for Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, that is Amul. Right, Jain Mehta is MD of Amul. Next, Muhammad Al Bashir, head of Hayat Tahrir Al Sham or HTS rebels, was appointed as the caretaker Prime Minister of Syria. Next, who has recently been appointed as the Prime Minister of France by President Emmanuel Macron after the former Prime Minister Michel Barnier? So, who was recently appointed as the Prime Minister? Francis Bayrou. Next, who has recently elected as the new General Secretary of All India State Bank Officers Federation and assumed charge on 1st of December 2024. So, who was recently elected as the General Secretary? Right option is Rupam Roy. Next, former Manchester City footballer Mikhail Kavlashvili was appointed as the 6th president of Dash, and he will assume his office on 29th of December after incumbent president Salome. Right? So, he has been appointed as the 6th president of Georgia. Next, who was recently appointed as the new managing director of State Bank of India for 3 years with effect from 18th of December. So, who was appointed as the managing director of SEBI? Rama Mohan Rao Amara, and that too for 3 years. He succeeded CS Sethi. Next, which bank has recently reappointed R. Subramaniam Kumar as its managing director and CEO for a period of 3 years till 22nd of June 2028. So, which bank is it? It is your RBL Bank has reappointed R. Subramaniam Kumar as their MD and CEO for a period of 3 years. So, that's all for the day, students. Now, let's move to revision part for better learning.
which country has recently become the first Caribbean nation to adopt India's popular instant payment platform UPI? It is Trinidad and Tobago, that is TNT. With this TNT, they became the first Caribbean nation to adopt the UPI. Next, which bank has recently launched the multi-currency world travel card, which allow the users to load and manage multiple currencies on a single card? It is Punjab National Bank. Right, this card supports 6 major foreign currencies, that is US dollar, euro, UAE, that is your United Arab Emirates dirham, then Britain or British pound sterling, Canadian dollar, that is CAD, and your Singapore dollar. Correct, that is your Singapore dollar. So these are the 6 currencies that are being supported here. Next, which non-banking financial company has recently partnered with RuPay to launch an equated monthly installment feature on UPI payments? So which non-banking financial company? That is your Bob Card Limited. This is the NBFC. Here the payments can be made via UPI at both online and offline merchants. And these payments can be converted into EMI at the checkout. Next, which insurance company has recently partnered with AU Small Finance Bank to offer life insurance solutions to their customers? It is Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited. This partnership will provide AU Small Finance Bank customers to access the Kotak Life's comprehensive life insurance products that includes your long-term, that includes your retirement, saving and investment plans. Next, for which country? Our country India has recently extended a budgetary support in the form of a rollover of 50 million treasury, $15 million treasury bills for another year. That is your $50 million T-bills. It is to Maldives, right? And this extension has been granted by State Bank of India, correct? In the form of T-bills, that is your treasury bills. Next, in September, SEBI, they have allowed Dash to sell credit default swaps, a move which aimed to boost the liquidity in the corporate bond market. So SEBI, they have allowed to sell the credit default swaps of in mutual fund, right? So I repeat, SEBI allowed mutual funds to sell these credit default swaps that will boost liquidity in the corporate bond market. Next, SEBI, they have introduced Dash, a process as an alternative to the reserve book building process for voluntarily delisting. So SEBI, they have introduced a fixed price process as an alternative to the reserve book building process for voluntarily delisting. As per this new framework, the promoters, they can offer to buy back all the publicly held shares at a price at least 15% higher than the fair price of the stock, and this new framework will be applicable to only those companies whose shares are frequently traded. Next, which bank has recently launched Sugam Rin Bhugtan Yojana, that is Sugam scheme? This is a one-time settlement, negotiated settlement scheme to recover non-performing retail loans. It is IDBI Bank, right? And this scheme, it runs from 2nd September 2024 to 25th of March 2025, and this scheme will provide distressed borrowers a chance to settle the dues and allow the avoiding the legal complications. Next, which organization or bank has recently provided a loan worth 31,673.79 crore rupees to Mumbai Metropolitan Region Development Authority to fast track the development of 9 key infrastructure projects? It is PFC, that is your Power Finance Corporation, and the major amount sanctioned is 15,071 crore rupees will be allocated to specifically for Thane Borivali Twin Tunnel project. Do remember that also. Next, which organization recently launched a dedicated foreign portfolio investor outreach cell as a part of an alternative investment fund and foreign portfolio investors department? So which is that organization? It is SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. This was a part of SEBI's AIF, Alternative Investment Fund, and FPI's department, that is Foreign Portfolio Investors Fund department. Next is SEBI. They have made UPI mandatory for individual investors applying for up to Dash in debt security public issue from 1st of November 2025. So SEBI, they have made UPI mandatory for individual investors applying for up to 5 lakh rupees
in debt security public issues. This will provide, or these provisions, they will basically be applicable from 1st of November 2024, and this will streamline the application process for the public issue of debt securities, non-convertible redeemable preference shares, municipal debt securities, and securities debt instruments. Next, as per NPCI recent notification, auto replenishment of Dash and Rupee National Common Mobility Card will no longer require the standard 24-hour pre-debit notification. Right? So, the auto replenishment of FASTag, that is NETC FASTag, correct, and NCMC National Common Mobility Card, they won't be requiring any 24-hour standard pre-debit notification, correct. And now you will be seeing these FASTags, they will also be linked to your satellites, right, and it will, you don't have to wait on the highways. Directly using the GPS, your amount will be deducted. Next, SEBI, they have recently announced a new framework to curb the excessive speculation in the Dash with effect from 20th of November 2024. So it is to basically curb the excessive speculation in the stock market, right. And these new rules, they will be coming into effect from 20th November. Earlier, SEBI constituted an expert working group to review the regulatory framework to protect the investors and foster the growth of equity derivatives market. ITBP रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, जो कि मार्क करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ITBP इन 1962. तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है ITBP रेजिंग डे. इस बार हमने 63rd ITBP रेजिंग डे ऑब्जर्व किया. नेक्स्ट आ जाते हैं UN डिसआर्मेंट वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 24 से 30 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं UN डिसआर्मेंट वीक, राइट. एंड ये बेसिकली आपका ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट द डिसआर्मेंट एक्टिविटीज़, ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनी रह सके. नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन इज UN वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 27 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं UN वर्ल्ड फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, करेक्ट. एंड इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है 27 अक्टूबर को, यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है. पहली बार सन 2006 में इसको ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ आयुर्वेदा? तो 29 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे, राइट. एंड आयुर्वेदा का जो रोल है उसके बारे में, जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो प्रिवेंशन कॉस्ट हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड जो हमारी हेल्थ पे इस पर इफेक्ट पड़ता है, राइट, ये जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है. तो 29 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है. इसकी थीम याद रखेंगे, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ. नेक्स्ट, इंडियन आर्मीज इन्फेंट्री डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया. कब? तो कब ऑब्जर्व करते हैं हम इस डे को? 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं ये डे टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेंट्री इन प्रोटेक्टिंग इंडिया सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी. नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 28 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट. पहली बार सन 2002 में इसको ऑब्जर्व किया गया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनिमेशन. नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 29 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब. पहली बार 2023 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था. एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, correct, to raise awareness of the importance of care and support in fostering gender equality and sustaining the societies and economies. Next, when is UN World Cities Day observed? तो World Cities Day कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट. सिटीज़ के बारे में, बेटर लाइफ हो, बेटर सिटी हो, बेटर लोकेलिटी हो, बेटर सोशल लाइफ हो, अर्बनाइजेशन अच्छा हो, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है. पहली बार 2014 में इसको ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट, वर्ल्ड वीगन डे. वीगन क्या होता है आपका? जिसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स ना हो, राइट. एनिमल रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ना हो, वो डाइट को वीगन डाइट कहते हैं. तो वर्ल्ड वीगन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 नवंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब. 1994 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट आ जाते हैं UN इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 2 नवंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट. मतलब जर्नलिस्ट जो काम करते हैं, राइट, वो प्रॉपर तरीके से कर सके, बिना किसी रोक टोक के कर सकें, एंड उनके खिलाफ जो हम प्रोटेक्शन उनको दे सकें, राइट, उनको सेफ रख सकें, ये डे उसको हाईलाइट करता है.
नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन 1 राइट है। राइट, विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट, एंड दिस डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है सीवीसी के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, जो कि प्रमोट करता है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। इसकी एक थीम याद रखेंगे विजिलेंस अवेयरनेस वीक की, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट, इन्हीं को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। राइट, इनको सरदार का टाइटल मिला था जो इनका एक्सेप्शनल लीडरशिप है उसके लिए। एंड इस साल हमने 149th बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 3 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू सेफगार्ड द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। पहली बार सन 2022 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है सुनामी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशंस, एंड इसको पहली बार 2016 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन इज यूएन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो कब ऑब्जर्व करते हैं इस डे को? हम ऑब्जर्व करते हैं 6 नवंबर को। करेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू यूएनईपी in the past 60 years, almost 40% of all the internal conflicts have been linked to exploitation of natural resources. नेक्स्ट, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया? तो 7 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया। एंड लेवेंडर रिबन यहाँ पे थीम रहेगी, सिंबल रहेगा आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे का। राइट, पहली बार इसको 2014 में ऑब्जर्व किया गया था, 7 नवंबर 2014 को। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी या वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे को ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब। तो 8 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। इसकी थीम याद रखेंगे, रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। पहली बार 2012 में इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो कब ऑब्जर्व करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज डे? 9 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया, ताकि जो लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सके मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, एंड कोई भी व्यक्ति जिसको लीगल एड की ज़रूरत है वो उसको प्रॉपर तरीके से मिल सके। नेक्स्ट, 136वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन कब सेलिब्रेट की गई? तो ये 7 नवंबर को सेलिब्रेट की गई। राइट, एंड डॉक्टर सीवी रमन, इनको रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है। राइट, काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे। 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। भारत रत्न से इनको 1954 में सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस साल 136वीं एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी और पहली बार इस डे को 2008 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है, व्हेन इज यूएन वर्ल्ड डायबिटीज डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। राइट, तो कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे को? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट्स, ये आप मुझे बताओ होमवर्क के तौर पे। राइट, इसी के अलावा अगर पूछें वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, बात करें वर्ल्ड न्यूमोनिया डे 12 नवंबर, हम बात करें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या फिर जन प्रशासन दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 नवंबर। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे और मेक थिंग्स ईजियर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर को। डेट आप मुझे बताओ नीचे कमेंट करके। इसके अलावा चिल्ड्रंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। राइट, उनका जो बच्चों के लिए जो प्यार था, राइट, उसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न अवार्ड से भी, एंड इनको 1970 में पोस्टहॉम्यूसली, मतलब इनकी मृत्यु के बाद, इनको वर्ल्ड पीस काउंसिल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है
इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन 15 नवंबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि प्रेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा सके। एंड ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर को, राइट, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है हमारी प्रेस, क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज़ है जो सच को बाहर लाती है एंड इनके ऊपर कोई दबाव ना आ सके किसी भी तरीके से, एंड ये फ्रीली यहाँ पे काम कर सके इन द सोसाइटी।